गाइस, सबसे पहले आपको चाहिए एक फ्रेम। आप यूज़ कर सकते हो फ्री स्टाइल या रेसिंग फ्रेम। मैं यूज़ कर रहा हूँ रेसिंग फ्रेम। फ्रेम के साथ आपको मिल जाएंगे थोड़े एल्यूमिनियम कॉलम्स जो आपको हेल्प करेंगे अपर माउंट और लोअर माउंट को जॉइन करने में। फिर आपको सारे ही मोटर्स माउंट करने हैं, पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि एक मोटर एंटी क्लॉकवाइज हो तो दूसरी मोटर क्लॉकवाइज होनी चाहिए। आपको मोटर के साथ ESC को शोल्डर करना पड़ेगा, और ESC के और मोटर के पिछले 2 वायर्स अगर आप रिवर्स कर देते हो तो मोटर की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। मोटर के साथ आपको मोटर नट्स मिल जाएंगे, 2 एंटी क्लॉकवाइज एंड 2 क्लॉकवाइज। वो आपको मोटर के साथ प्रोपेलर जॉइन करने में मदद करेंगे, और आपको अभी मोटर एलन की के मदद से फिक्स कर देनी है। भी आपको फ्रेम के साथ PDB मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जॉइन करना पड़ेगा। अब आपको फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड फिक्स करना है। मैं यूज़ कर रहा हूँ SP रेसिंग F3 फ्लाइट कंट्रोलर। अब आपको रिसीवर के लिए पिन कनेक्ट करनी है, और मैं यूज़ कर रहा हूँ PPM रिसीवर। वो आपको कनेक्ट करना है फ्लाइट कंट्रोलर को पावर देने के लिए। अब आपको जिप टाई की हेल्प से ESC को फिक्स कर देना है फ्रेम के साथ।